So today we have seen, actually yesterday we have seen some, it's a case, right? In this syllabus, especially, we need to discuss a number of cases, corporated, incorporated. And we have studied a number of financial statement, how to prepare it, budget, planning, and number of things we have discussed and we have studied in current trends and financial places. All cases related to finance, market, banks, whatever. So yesterday we have seen Ujjivan Bank Limited reports. Okay, when they established, and from there to till date, what is their analysis of financial way, right? So yesterday we have seen a number of statement, right? Here we have mentioned. So microfinance, when the bank was established, what is the microfinance is there, what is the assets in quarter wise, right? Quarterly report in last 19, 20 and 21. We have seen yesterday how they prepared their chart. First they prepared the table, after that they prepared chart and then graph, right? So you mention all it base, because as an MBA student, university and wherever expect you from that kind of reports, that kind of analysis, and that kind of SIP also, no copy paste, right? uh, so we have seen gross advances and disbursement trend, what is the revenue, what is PAT, what is a microfinance, how many microfinance loan disbursed in last 2021 and quarter wise, and what is their input. Gross, here they are mention some snapshots, they mention group loans, and not only the Indian, all Indian, not only Indian, World Bank report we have seen, right? So how many the group loans, MSMEs, other sectors loan we have studied yesterday. How many retail franchisee picking up, right? And liability of the franchisees, how many payment, what is cost, what is deposit, right? Current saving assets, balance, credit, retail, everything we have studied. Got it? Now, well diversified deposit mix. What it is? Region wise deposit, branch wise and segment wise, right? रीजन मीन्स फॉर एग्जाम्पल पूना स्टेट है, और पूना स्टेट में जो छोटे छोटे यूनिट्स है या जो विलेजेस है, इंक्लूडिंग दैट, सो दैट इज द रीजन वाइज. ब्रांच वाइज मीन्स फॉर एग्जाम्पल उज्जीवन का ब्रांच पूना में है, मुंबई में है, राइट, दिल्ली में है, वेयर एवर द ब्रांच वाइज स्टडीज. Because when we prepare a balance sheet of Ujjivan, so we consolidate it, means all branch, we need a standalone balance sheets of all branches, then audited balance sheet, right? And after that we consolidated all, right? We consolidated all reports and prepare one balance sheet. Got it? But before that we collect all branch stand alone balance sheets, right? So here we have seen this graph mention east, west, north, south, region wise deposit mix, right? East, it is a 15% deposit, west it is 30% deposit, north it is 35%, south it is 20%, right? So the deposit scheme or deposits is available that percent wise. Now region wise deposit is metropolitan 15%, urban areas 42%, semi-urban it's 15%, and rural it's 1%. Only rural में 1% deposit हुआ है. Now it is segment wise. Means segment means individuals, how many individuals deposit, how many adult deposit, how many
female deposit, how many male deposit, how many couple deposit. So n number of, right, individually bank deposit, then corporate. So they calculated on that basis also. So thought comes in your mind, what is your subject, right? And you will doing report on that basis, right? So individuals, banks, corporate, government, and that's right. So 5%, 4%, 7%, 39%, and 45%. Corporate deposits increase by 45%. So that is the report showing that how much deposited in Ujjivan Bank for region wise, branch wise, and segment wise, right? So that is a report, and for that they studied most. This is the cases, right? So region wise case is it, branch wise case is it, and segment wise is it. Then they work it and they elaborate it. Region wise, they visit region to region and collect data and prepare chart, and on that basis they prepare graph. Branch wise also they collect data from branch, then they interpret it, and segment wise they segregate their data, right? Collection data of region wise and branch wise, and after that they segregate the data individually, bank wise, corporate, government wise, whatever you want, and then they prepare graph of that base. Now adequately capitalize, right? So capital is most important, you know, like that when you start your any business, so you need a capital, means some kind of money, finance, right? Without it you can't start your business, and you are not move your business. So for that, credit risk weighted asset, what it is for most important and required, because you when you prepare a plan and for implementation of plan you require finance, right? And risks also. So here we have seen some kind of credit risk. Credit means loan पे भी आपको मिलता है, weighted asset जो भी है, you should deposit or you should take a loan on that basis. So June quarter, September quarter, December quarter, March quarter, and June quarter. So quarter wise they complying with the RBI's norm under SFP license, the bank got listed and raised a fresh capital of rupees 1053 crores, including employee stock purchase scheme. Okay, so here are tier capital 2, total capital, right? Credit report, whatever, tier capital 2 means they have calculated ratio wise, amount wise, and they calculate the ratio finally. Now financial overview, what it is, yesterday we have completed from there and today we have seen the financial issues, it's okay. So what is the financial overview? Financial overview is cost to income ratio, operating expenses, average assets, right? So it is net interest income and net interest margin, right? So net interest income and net interest margin, how it will come? So pre-provision operating profit, quarter basis or financial year wise, you maintain your statements, right? How much sale have done, how much purchase have done, how much expenses are done, how many taxes you need to pay, and on that basis you calculate your gross profit and net profit, right? So every bank, they segregate their deposits, how much deposits are there, how many cash are there, how many fixed deposits are there, then how much share, how much people are invested in share, policy, pension, PPF, and everywhere. And they collected data, whatever the expenses they added and minuses, and on that basis how much interested they issued the people, how many interested received from loans and advances which they have provided to people, right? So they collect, already they have an entries in their transactions, and they segregate it and prepare report and published in newspaper. So I request you to all of you, please refer every day the Times of Economics paper.
there are mentioned n number of financial statements, financial queries. So it's really help you if you know how to read it every day and every chapters when we start our financial specialization subject. So every day, every chapters we told you how to read financial report, what is cash flow, fund flow statement, balance sheets and all. So please be ready to read it every day. Only 15 to 20 minutes you spend for read it, and just analyze in your mind what you have seen today, right? What is the and most important thing, if you read different companies reports, so you not only read, so just you overview to Google. Okay, so what happened, the plus point is like that, you know the n number of companies, you remember that that company report you read it, so you know whole market which company is best. Then you should know that what is the profit and revenue of company, and you may apply for that. So at least daily basis, one or two company review you should do every day. Only whatever you read, don't read the accidental news, political news, but read that kind of news, the company news, share market news, right? What happened actually there. So you studied, and on the time of interview, you know very well what is actually. So financial report preparation is different and reading is different. Got it? Am I audible to all of you? Do you understand what I am saying? Okay. Now, here we have seen the net interest income and net interest margin. Then cost to income ratio and operating expenses dash average assets percent wise, right? So operating expenses divided by average assets. So average assets means book value per share, what it is. So here they mention 8.3% and total it is 64.4%, whatever the data. Now here quarter 4 20, it comes 7.8%, and as it is 60, means there is no difference. Okay, it's a quarter, first quarter and fourth quarter, and first quarter of 21, its impact, because it's come down, it is a 55%, 55.9%, right? It means 5.8%. So that is the average expenses they mentioned in the report. Now, and it's not a fake report, huh? It's a positive report, audited report they published. Now this is quarter 1, quarter 2, quarter 3. So they operating profit 161, 191, 215, 215. Here they have mentioned per value share 11.9, 12.5, 16.8, 17.3 and 17.6. Now this is the income statement, right? And what it is, interest earned, how much it is in financial year 2021, 20, end of the year, quarter wise, and end of the quarter. So every, actually basically they prepare day wise, right? So whatever the average in day wise, it will month wise and then quarter wise, right? So it is easy if you are expert in Excel, so you know how to prepare it. Now interest earned in the month of, not month of, in the quarter of first 21, 746, right? Other income is 29 and total income is 775. Second quarter का total income था 705. It is third quarter का 10% overall ratios. Then quarter 20 का 810 and 4%. Now interest expended, it is 288, 253, 14%, 271, 6%. And operating expenses
So provision and contingencies means first they calculated total income. Total income, they calculated interest on and other income, right? Then they calculated total income. Then they added interest extended and operating expenses, whatever they did. Then provision and contingencies, the after that provision for tax, whatever they paid, and total expenditure calculated 720. So 775 total income minus total expenditure, it comes to 55, means net profit for the year. फाइनेंशियल ईयर 21 में जो उनका क्वार्टर 1 का प्रॉफिट था वो 55. हाउ इट कम्स? सो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. गॉट इट? एंड व्हाट asset comes in total income? It's a interest earned because it's a bank, and bank earning is interest, right? So and other income like brokerage, commissions and all. Then total income and total expenses, what it is? Interest expended. How much interest? Because bank देती नहीं है, तो बैंक दूसरों से लेती भी है. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बैंक में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, तो बैंक ने अपने पास नहीं रखे वो पैसे, राइट? ही spend others or he transferred to other bank when it's required. Now second day मुझे बहुत इमरजेंसी थी, तो मैंने क्या किया? बैंक में फोन किया और बैंक को बोला मुझे पैसों की जरूरत है. तो बैंक ने क्या किया? बैंक के पास नहीं थे, बैंक ने इंटरेस्ट से लेके मुझे दिया, राइट? सो दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, व्हाटएवर. Provisions and contingencies. Provisions and contingencies means like that tax payment, TDS transactions, a number of, right? And on that basis they calculated their net profit for that period, right? Then quarter 20 का जो net profit था वो 94, 42%, 73 and 25%, right? Now total income breakup. What is total income breakup? Interest on loan. How much they receive interest on loan? 698 crores. And quarter 4 में कितना कलेक्ट किया था उन्होंने? 698 करोड़. सेम ही था. And 20 में कितना मिला था? 567. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 49 मिला, यहाँ पे 39 था. सिक्योरिटाइजेशन कुछ नहीं था, राइट? सो टोटल इंटरेस्ट ऑन उन्होंने 746 किया. देन प्रोसेसिंग फी चार्जेस, इनकम, PSLC इनकम, ट्रेडिंग इनकम, बैड डेब्ट रिकवरी, इंश्योरेंस इनकम, मिसलेनियस इनकम, ये सब टोटल इंटरेस्ट जितना भी अर्न किया वो ऐड किया, राइट? और मतलब अदर सोर्सेस से कहां से उन्होंने इनकम किया वो, एंड टोटल इनकम उनका आया 775, विच दे. देखिए इसका अगर आपको मान लीजिए बाइफरकेशन पूछा, चलो है ना, टोटल इनकम का बाइफरकेशन चाहिए. इंटरेस्ट अर्न में, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न है, इंटरेस्ट अर्न में 746 कहाँ से आए? ठीक है, अभी मेन पॉइंट पे बता रही हूँ. तो इसका बाइफरकेशन होता है, इसका वर्किंग नोट होता है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम तो इतना लेंगे नहीं ना, इतनी सारी, तो टोटल अमाउंट हम लेंगे. अब इन्होंने मुझे पूछा कि मुझे 775 का बाइफरकेशन चाहिए, तो मैं ये वाला शीट ओपन करूंगी एंड आई विल शो हिम कि सर ये ऐसे आया 775 का बाइफरकेशन. फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मुझे 698 का बाइफरकेशन चाहिए. हाउ यू कैलकुलेटेड इट? सो आई शेयर हिम माय होल डेली रिपोर्ट, राइट? और वीकली रिपोर्ट कि ये वीक में इतना हुआ था, ये वीक में इतना हुआ था, ये मंथ में इतना हुआ था, ये डेली से ही वीकली मंथली बनेगा, एंड दैट इज द बाइफरकेशन. नाउ दे आस्क मी हाउ यू कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका भी बाइफरकेशन मेरे पास रहेगा. सो एवरी शीट्स you have to prepare, and not only prepare but you should have what their working notes, same sheet. बट वो जिनका एक्सेल अच्छा है ना वो उनको ही आता है, राइट? सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. नाउ दिस इज द
bifurcation of each transactions, whatever they have mentioned in first sheet means total income sheet, and it's a breakup means their bifurcations, right? And I'm saying hello. How many of you read it? How many of you understand? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Now, is this whole bad debt recovery? Okay. Now we have seen balance sheet, right? So, how we read balance sheet? Here are mentioned capitals and liabilities, June 20, March 20, and June 19. Okay. First, we have seen June 19, then June, March 20, and then June 20, right? So every companies and corporate industries, they just change their format. They have right, but you don't confuse. Okay. So here, capital and liabilities. What it comes? The capital mentioned in the month of June 19 quarter 1,640. Okay. So you should have a bifurcation of it. How much कैपिटल आर देयर, उसका भी बाइफरकेशन होता है ना, कहाँ से आया, कितने पार्टनर है, क्या है, वॉट एवर, एंड हाउ यू कैलकुलेटेड वॉट एवर द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, एवरीथिंग, एंड फाइनल अमाउंट यू मेंशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. नाउ प्रोफार्मेज होते हैं ये सारे, सब एक्सेल में बनते हैं ये सारे प्रोफार्मे, एंड ऑल प्रोफार्मास लिंक टू ईच अदर. इफ यू लिंक टू ईच अदर, ऑटोमेटिकली द वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम, राइट? नाउ employee stock option outstanding. What it is? Employee stock option outstanding. So for that you need to calculate age-wise debtors. Okay, age-wise debtors means 30 days, 90 days, 60 days, 90 days, 120 days, and 365 days. And average you should mention here. But before that, you need to calculate it day-wise, right? Now reserve and surplus. So you should know what it comes in reserve and surplus. So all bifurcations are there. So here we have seen it's a liability. All it is liability. Here we have seen in the month of June 19, 274 only reserve and surplus. And in the month of March, in the quarter of March 20, 1,238. And here also raised in the month of June quarter 20, 1,293. Got it? Deposits. How much deposits receive? June 19, 7,957. Here are 10,000 and here are 11,000. So increase day by day. Borrowings. What it is? In the month of June 19, 3,946 borrowers. Here 3,000 not affected too much because of first quarter, so 3,953, but in the month of June 20 it raised 4,479. Now other liabilities and provision, what it is? Other liabilities and provisions, it is 4,478, 491 and 621, right? So assets, cash and balance with रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना है? 300 था 19 में, बट मार्च 20 में 1225 एंड जून 20 में 1532. देन बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड असेट्स, अदर असेट्स, all balances mentioned in this chart, right? Now next, so all balance sheets figure they mentioned, right? Now building a mass market bank. How? Means this bank building a mass market bank means market में इतना famous हो गया ये bank, right? So how it is?
well placed to gain from evolving country demographics. Countries का demograph higher किया. So SFBA suited to reap benefits of the expanding middle class expansion, right? So primary focus areas for large private sector banks. They studied a large private sector's bank. How many private banks are there? They studied first. Then target markets for SFBS, right? They SFBS means small finance banks, right? Then they have targeted then how many small finance bank in market. First they have studied in private sector banks in market, and after that they have a target कि small finance banks को create करना है, highlight करना है, market करना है, advertise करना है. So 219 means high था, upper middle में 60 mm and lower middle में 50 mm था, right? So total अगर count किया जाए तो 151 means 69% low, here 43% and here 15%. That is the strategy of market, and small finance banks suited to reap benefits of the expanding middle class expansion. इसके लिए था only and only middle class में. So USB's enterprise product, individual products everywhere, right? So FIG lending, personal loan, housing loans, they issue branch banking, micro banking, rural banking, vehicle loans, MSC's banking, n number of loans they provided, right? 2005 में इसका जो रेशो था वो 69, 2018 में 43 and 2030 तो 15% होना चाहिए. मतलब उनका कहना ऐसा है कि जो रेशो है वो कम होगा. मीन्स एवरीवेयर दे पब्लिश, they not publish, they open their branches, so middleman and poor people help and supported to start their business or financially, to make them financially strong, right? Comprehensive suite for banking product and service. How many banking products are here? So first, micro banking, second, micro and small enterprise loan, affordable housing loans, vehicle loans, personal loans, financial institutions group. So loan, how many loans they provided? They provided loan, deposits and channels. So loans, they provided group loan, individual loans, agricultural and allied loans, gold loans, street vendor loan program, right? So small finance bank have an idea and they studied market, and after studied the analysis what they require of middle and poor people, and on that basis they prepare plan and they work out. So they decided micro banking branch and they provided group loan, individual loan, agricultural and allied loan, gold loan, street vendor loan and whatever the program. So micro and small enterprises loans for secured enterprise and business loan, overdraft, loan against rent receivable, right? Overdraft with fintech partnership, right? So if you are working in secure enterprise, you will get loan, and if you have a overdraft, you will get loan. Loan against rent receivable, if you receive any kind of rent, so on that basis they will provide loan. Then overdraft with fintech partnership, right? If you are working with fintech people, financial company, so on that basis they will provide loan. Now affordable housing loans, so constructions and purchase, if you are constructed house you will get a loan, if you want to purchase house you will get a loan. Home improvement,
If you want to development or innovation your home, that time you will get loan. Composite home equity means home पे shares हो या composite home हो, so उन्होंने वो भी लोन प्रोवाइड किया. Vehicle loans, two wheeler loan, electric three wheeler loan and CV loan, right? Now personal loans, loan to salary customer and top up loan, right? So financial institution groups, term loan to non-based fund banks and microfinance institutions call money product. So a number of facilities they provided regarding loan. Now deposit में retail product, so current account, saving account, term deposit, goal based saving and digital saving and fixed deposit. Institutional product, fixed deposit, term money, current account, certificate of deposit and ISRO's account. And fee-based product, it is insurance, Aadhaar enrollment, services, and CMS. So n number of loan they have provided, they prepare, they chart, and they discuss, and on that basis they provided. समझ में आया क्या? What we studied? Yes or no? Yes, ma'am. क्या? Let me elaborate. मैम बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और उसमें क्या क्या आता है, और फिर हमने वो भी देखा कि बैलेंस शीट वगैरह. Now channels. So how they prepare their channels? Channels means how many branches they establish, how and service, how we reach to direct customer, how to interact with customers. So a number of channels are there, social medias are there, WhatsApp are there, Twitter are there, mobile phones are there. So they use that channels, right? Due to pandemic, a number of people use these channels, right? So branch banking, right? Then ATM, debit and credit card, post office, QR, UPI loans, mobile and missed call banking, right? Phone banking and IVR, internet and corporate banking, right? So a number of schemes they provided for rural areas, means जिनको नहीं समझता था है ना, तो उनको लिए ये सारी स्कीम्स दे अवेलेबल. सो जैसे वो एड वगैरह देखते हैं ना फोन पे, कैसे मतलब फोन पे वो खुद वॉइस को ये करके बात करते हैं और पूछते हैं मोबाइल से, बिकॉज दे आर illiterate people, they don't know, so they ask in Google, right? So that through they started their own. वो एक ऐड आती है क्या कि एक रिच पर्सन रहता है, उसके यहाँ वो एक वर्कर रहती है एंड वो उससे क्वेश्चंस करती है कि साहब लोन के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? सो वो उसे आइडिया देता है कि आस्क गूगल ना, गूगल से पूछो. So she used this and whole instructions they will give the Google and they open, and next day when she will coming, so she told her owner that I will start my dhaba, whatever, because she is making good food maybe. So that facilities provided. So n number of channels and ऐसे advertises वो बनाते हैं ताकि people attract हो, right? So that is the channel they distributed market. Wait a minute, oftenly same slide open. Okay, wait a minute, yes. Now next, focus on growing stable and granular liability, right? What it is, focus, how they focus all banking sector, how they complete their target, because banking work not a joke, means since when we start our syllabus we have seen a number of bank transactions, especially financial laws, because legal matter is important. So legally they are doing everything, right? So first, focus growing stable and granular liability based. So what they
how they prepare their target. So target segment is, their target is trader, retailer and MSE, salaried and corporate salaried person, youth, senior citizen, micro banking customers and family members, then local institutions and governments, schools, clinics, and marginal farmers allied agricultural segments. Everything they focus overall that things. Now what they are doing with branch, so dominate a branch catchment, advance business net banking, मीन्स अभी बैंक का काम बढ़ गया है. फर्स्ट ओनली बैंक में जाके काम करना पड़ता था, कैश ये, अभी उनका काम इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एन नंबर ऑफ पीपल ट्रांसफर और डिपॉजिट देयर मनी फोन पे, गूगल पे, राइट, एंड भीम पे. they paid n number of expenses for their use n number of apps, so they reconcile every सेक्शन. पहले तो बैंक को एक ही रिकंसिलेशन बनाना पड़ता था, राइट. अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं उज्जीवन बैंक की कस्टमर हूँ और मैं सारे चैनल्स यूज करें, मैं एटीएम भी रोज यूज करती हूँ, मैं फोन पे गूगल पे भी यूज करती हूँ, मैं नेट बैंकिंग भी यूज करी हूँ, एवरीथिंग. तो उसे कितना रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, उसको सारे अकाउंट स्टेटमेंट यूज करें. हाँ, वो दैट इज गुड कि एक ही नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर पे ही वो आ रहा है. सो दे जस्ट पुट registration number and the detail comes, and on that basis they reconcile my statement. And after that, so everyone, not only my bank, have a n number of customers, right? So how they reconcile everyone. तो देखिए उन्होंने, और इस सिस्टम को अपडेट करने के लिए उन्होंने कितना अच्छा साइबर सिक्योरिटी को फॉर्म किया है. मीन्स एक्चुअली उन्होंने वो सारी सिक्योरिटी सिस्टम में अपलोड करके रखी है कि विद इन अ सेकंड मैसेज, विद इन अ सेकंड ट्रांसफर, राइट, विद इन अ सेकंड तुमको अकाउंट में डिपॉजिट. सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड फॉर ऑल बैंक्स. यस, उनका काम तो बढ़ गया है ऑफ कोर्स, राइट. नाउ एनकरेज यूजर, भले ही वो सारी फैसिलिटी डिजिटल हो रही है, डिजिटाइजेशन हमारा अभी बैंक में जाना बंद हो गया है, बट उनका काम बढ़ गया है, उनको हर चीज को अपडेट करना पड़ रहा है. फोन पे, गूगल पे और कौन से ऐप आने वाले हैं नहीं पता. बैंक में आ भी गए होंगे तो भी उन्होंने डिलीवर नहीं किए होंगे, मे बी, है ना. भाई यही उनसे नहीं हो रहा है तो और क्या. तो एन नंबर ऑफ चैनल्स आर देयर. सो एनकरेज यूजर adoption for digital channels. Everyone, they स्पेशली रूरल एरिया में जाके उन्होंने ये सारा ट्रेनिंग दिया, उन लोग को यूज किया, और आपने देखा कि अभी सभी लोगों के पास फोन पे गूगल पे है. इवन वेजिटेबल, जो स्ट्रीट पे वेजिटेबल सेल कर रहा है उसके पास भी गूगल पे है, राइट. सो उज्जीवन बैंक ने क्या किया, स्टडी करके, प्लानिंग करके सारा डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट मार्केट में ओपनिंग किया, राइट. और वो भी स्पेशली मिडल मैन एंड पुअर, पहले जिनका काम कैश से होता था अभी उनको भी बैंक से जोड़ दिया गया ताकि उन तक भी लोन फैसिलिटी मिल सके उनको भी, और उनका भी बिजनेस स्टार्टअप हो सके, और बैंक में और टैक्स में उनका रिकॉर्ड रह सके, राइट. नाउ सो डिजिटल प्लस ब्रांड लीड ट्रांजैक्शंस, पेमेंट सॉल्यूशन, फी बेस्ड प्रोडक्ट, एवरी रिकॉर्ड. अभी मैं कुछ भी लेती हूँ, है ना, मैं अगर 5 रुपए की भी चीज लेती हूँ तो भी फोन पे से पेमेंट होता है, तो बैंक को पता चल रहा है कि wherever I spend, है ना. तो मेरा खर्चा अगर ज्यादा हो रहा है, सैलरी अगर कम है, तो इट्स ओके ना. वो ट्रांसपेरेंसी सारी दिख रही है आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बैंक को, सारी चीजें दिख रही है ना. सो दैट इज द गुड थिंग. एंड स्पेशलिटीज लाइक दैट कि everyone reach the schemes, whatever the schemes है ना, बैंक की स्कीम क्या है, ये बैंक का क्या केस है, वो बैंक का क्या केस है, तो एवरी केसेस पता चल रहा है. नाउ डिफरेंशिएटेड ब्रांच डिजिटल एक्सपीरियंस, डाटा एनालिटिक्स टू फैसिलिटेट क्रॉस सेल बेटर सॉल्यूशन, है ना. तो everyone, अभी बैंक वालों को भी माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, उन्होंने ऐप दे दिए, उसके थ्रू आप करो.
परिणाम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। सो लोगों को एक्सपर्ट बनाने के लिए, ट्रेन करने के लिए उन्होंने परिणाम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया। दीक्षा, पैसों की ABCD, राइट, चिल्लर बैंक, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए, है ना। अगर आपने ICICI का ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया होगा तो उसमें ये सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, है ना। तो ज्वाइन करिए, ये क्या प्रोग्राम्स है इसके बारे में पढ़िए। सो इट्स अ लीड बैंक और उनने बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में थ्रू, अभी आपका RBI भी है बट वो एग्रीकल्चर में ज्यादा ये करता है। उन लोग को ठीक है, उन लोग तक स्कीम पहुंचाता है, उन लोग को नए नए स्कीम के बारे में बताता है। सो दैट इज इट इज, बट इन लोगों ने भी नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट किए। नाउ रैम्प्ड अप रिटेल डिपॉजिट्स rupees 4,920 crores, 29 crores, means 45% deposits are there. Now other income, diversifying revenues and streams. So third party product, now right, third party, जैसे third party insurance हम लोग लेते हैं, so it is third party product. So how it is other income distributed here, here and here. So here it is third party product, here it is PSLC income, right, and here it is fee based and other. It's a free and it's a fee based and others. उन्होंने एजेंट बना लिया कि भाई तुम भी डिस्ट्रीब्यूट करो, तुम्हारे थ्रू आता है वो अदर इनकम, राइट। सो PSLC इनकम में उन्होंने नील दिखाया, बट फोकस अप्रोच टू मिनिमाइज PSLC इनकम बाय वे टू ऑटोमेटेड ट्रेजिंग एंड बेटर टाइमिंग. Now majority of portfolio is PSL. Complaint versus regulatory requirement of maintaining 75%. Right? ये direct था और ये fee based था और ये indirect था. So here we have seen 27 crore in Q1 in the year of 21. So processing fees, इसमें प्रोसेसिंग फीस में उन्होंने AMC, NUTS, CMS मीन्स वो जो ये लगता है ना हमारा ECS स्कीम उसे बोलते हैं, ट्रेजरी इनकम, बैड डेट रिकवरी एंड अदर्स, राइट। सो अगर जैसे मुझसे ये सारी चीजें नहीं हो रही है ना, तो मैं क्या करूंगी भाई, ठीक है, पेनल्टी लगा के, जैसे प्रोसेसिंग फीस पे चार्जेस लेती है बैंक, लोन प्रोसेसिंग हो, अगर आपका EMI या ECS बाउंस हो गया तो उसपे वो चार्जेस लेती है। ट्रेजरी पे इनकम होता है, अगर कैश 50,000 के ऊपर डिपॉजिट करते हो तो यू नीड टू पे पेनल्टी और यू नीड टू पे एक्स्ट्रा कैश 2% व्हाटएवर. देन बैड डेट रिकवरी एंड अदर्स, राइट, अगर वो भी रिकवरी आप करते हो तो उस पे लेते हो. अभी यही अगर चीजें मान लीजिए नहीं हो रही है, बैंक के कहने पे भी लोग पे नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी को चूज किया, जैसे एडवोकेट्स एंड व्हाटएवर एसोसिएशंस को, और उनके थ्रू उनको नोटिस भेज के वो रिकवरी करना स्टार्ट किया, राइट. सो डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू स्ट्रीम में उन्होंने क्या किया, करंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू बी रैम्प्ड अप ओवर मीडियम टर्म्स. फिर उसमें इंश्योरेंस था, लाइफ, जनरल, हेल्थ, रिलेवेंट बेनिफिट्स, टारगेट सेगमेंट्स, एवरीथिंग, प्रोडक्ट अंडर इवैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड्स. तो इसके थ्रू भी उन्होंने इनकम, ठीक है भाई तुम्हारे प्रोडक्ट है क्या, हमको दो, हम कमीशन देंगे, उस बेस पे सेल होगा. अब बैंक पे कोई भी ट्रस्ट करता है तो बैंक क्या ज्यादा परचेस करते हैं, बिकॉज ऑफ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कम है बट सिक्योरिटी. सो दैट इज द थर्ड पार्टी. सो हियर इट इज. नाउ नेक्स्ट, serving customers through multiple delivery channels, right? So here are the n number of delivery channels, like personal and business internet banking, web based, can be accessed from any systems, high volume bulk upload facility, customizable canal centric and approvable metrics. So n number, if you just open your bank account na, so you have seen n number of schemes, n number of फैसिलिटीज अवेलेबल देयर, राइट. ATM का फैसिलिटी है, डिपॉजिट का है, कैश का है, क्रेडिट कार्ड का है, एप्स का है, और उसका इंफॉर्मेशन भी उन्होंने उसमें
मेंशन किया हुआ है, राइट। देन एटीएम में 475 एटीएम्स इंक्लूडिंग 52 ऑटोमेटेड कैश रिसाइकल मशीन्स उन्होंने दिया है, ताकि हर एटीएम पे उन्होंने मशीन्स लगाए हैं और ऑन दैट बेसिस पे वो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। देन 321 एटीएम्स री एनेबल्ड विद बायोमेट्रिक रेस टू बी कंप्लीटली बाय सितंबर 2020 तक उन्होंने और बायोमेट्रिक्स लगा दिए, और 12 रीजनल लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, है ना, उसमें आप देखते हो। नाउ वेब टैबलेट बेस्ड ओरिजिनेशंस, टैब बेस पे भी उन्होंने वो कर दिया, फॉर्म कर दिया। देन 24/7 फोन बैंकिंग अलाउ कर दिया, लोन ले सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं एनी लैंग्वेज में, ये कर सकते हैं। अगर आपको मिस कॉल पे लोन चाहिए तो वो एसएमएस उन्होंने बना दिया कि आप सिर्फ एसएमएस करिए, आपको वहां से कॉल आएगा और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, राइट। So multiple delivery channels, multiple facilities they provided. So अभी कोई बोलेगा ही नहीं हमारे पास ये नहीं वो नहीं है, एवरीथिंग अवेलेबल कर दिया। हाई कस्टमर रेटिंग, एवरीथिंग, मतलब जैसे चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए, एक सॉफ्टवेयर से वो सारी चीजें उन्होंने एप्लीकेबल कर दी। नाउ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बोर्ड, अभी इन्होंने जितना भी इशू किया, इवेल्युएट किया, बट उसके लिए उन्होंने बोर्ड्स बनाए। बोर्ड्स मीन्स उन्होंने क्या किए, सारा, वेट अ मिनट, 1 second, yes, so what they did, they make a strong independent board, and on what basis, the name of person, एजुकेशन क्या था उसका, एक्सपीरियंस क्या है, राइट। सो n number of people are joined here and they work through this bank, right, because the people, ये किसका आइडिया था, यहाँ पे जो उज्जीवन बैंक का हमने केस स्टडीज देखा है, तो ये किसका आइडिया था, किन किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, उनका नाम, उनका एजुकेशन और उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे चित्रा कार्तिक अल्लाई है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर है, इनका क्वालिफिकेशन बीकॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया है और एमबीए सिम्बायोसिस से किया है इन्होंने। और व्हाट इज द एक्सपीरियंस, सर्व एज अ जनरल मैनेजर एट द चेन्नई रीजनल ऑफिस ऑफ एसआईडीबीआई, राइट। सो ऑन दैट बेसिस उन्होंने भी ये आइडिया ये करके, मतलब एक्सपर्ट पीपल का ग्रुप वर्किंग कर रहा था इस बैंक को या फिर इस स्कीम को सक्सेस करने के लिए, राइट। सो हियर विश्व मोहन महापात्रा पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था ये, और इन्होंने इनका एमए फ्रॉम जेएनयू, एमएससी इन मैनेजमेंट फ्रॉम अर्थूर, लिटिल मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड एमबीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और व्हाट द एक्सपीरियंस, प्रीवियसली सर्व एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Means all are experts, and that's why expert team come together and mix and share their decision planning, and on that basis the Ujjivan bank success to small finance bank, small finance bank. Great. Wow. Mahadev, he is a CA and ICWAI independent director of, where it is, LLP. Good. So Deloitte. Great. So yes, मीन्स देखिए कितनी, मतलब जस्ट वन थॉट कम्स इन माय माइंड कि इफ यू आर एजुकेटेड, मीन्स अगर आपने अपना एजुकेशन सही वे में किया है एंड यू आर रियली नॉलेजेबल, डेडिकेशन के साथ आपने नॉलेज गेन किया है, तो ये सारा एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा काम करने के लिए ऑलवेज मोटिवेट करता है। एंड ऑल पीपल यू हैव सीन हियर, they are well educated, they provided their services and number of bank sectors, dedications के साथ उन्होंने काम किया, और एक दिन ऐसा आया कि उनको एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा, जैसे कि स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस पे, और दे सक्सीड बिकॉज एवरीवन कम्स, उनके आइडियाज को शेयर किया उन्होंने एंड वो आइडियाज को एक्सप्लोर किया। सो ग्रेट, ऐसा कुछ भी नॉलेज मत लो, अच्छा नॉलेज लो। So here is the experienced management team, and he is Nitin
Chug, MD and CEO of Ujjivan Bank. He is सीईओ फॉर्म 19 से थे ये, इनको 19 में यहाँ का सीएफओ बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सीएफओ मींस यू नो रिच एक्सपीरियंस अक्रॉस ट्रेडिशनल एंड डिजिटल बैंकिंग विथ मल्टीपल एसोसिएशंस इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक में काम किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम किया है, वेरिड कस्टमर्स रिलेशंस रोल्स में काम किया है, एचसीएल में काम किया है. ओ माय गॉड, गुड. होल्ड्स अ बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. गुड. सो द टीम्स they work together, they work in training, someone in marketing and everyone, and they will create a such kind of project. और ये SIP है, एक्चुअल में ऐसा SIP होना चाहिए. You planned it, you worked it, you focus it, you research, analyze everything, and on that base you prepare your project. Got it? So that is the case. समझ में आया क्या ये केस आपको? यहाँ पे उन्होंने की ग्रोथ स्ट्रेटजीज दी है, एंड व्हाट इट इज द की ग्रोथ स्ट्रेटजीज. यस, हियर आर comprehensive and relevant product, then focus on digital banking and analytics, build a stable and granular deposit based, expand and optimize distribution network, continue focus on improving financial and digital inclusion, diversify revenues and streams. Great, really. So this is overall the case study of Ujjivan Bank, how they start microfinance and small banking finance, and they just provided to their customers, not only customers, they just elaborate in market. So shareholding pattern क्या था? Promoters है इनके, right? 80 promoters ही 83.32 means n number of people are promoters, means people na joined this. So residential, individual and HUF is 6.27, foreign investors are 5.47, alternative investment funds are there, mutual funds are there, and others are there. See, here are the point like promoters is Ujjivan Financial Services Limited, which is a crore investment company and listed on NSE and BSE, National Stock Exchange, and BSE means Bombay Stock Exchange. पता है ना NSE BSE कि नहीं पता? Yes ma'am. Ujjivan inclusive growth philosophy. So what the philosophy they use, right? Financial literacy prepared with Parinam Foundation for Financial Literacy program like Diksha, Chiller Bank and पैसों की ABCD. Then environment protections में उन्होंने promoting protections of environment through project स्वच्छ neighborhood उनके साथ टाइप किया, making 100 meter around our offices and branches to cleanest area in the city, town and village we operate. Then promoting sanitization, public health, environment means एक इसमें कितने सारे काम हो गए उनके. देखिए डेवलप करते करते कहाँ तक पहुंच गए, राइट? कम्युनिटी को डेवलप किया, लोगों तक पहुंचे, लोगों को सारी चीजों के बारे में ज्ञान दिया. And number of programs they have started, and finally their case is success. ऐसी फाइनेंशियल केसेस होती है कि कैसे प्लानिंग आपने किया, कैसे बजट किया और कैसे उस केस को सक्सेस किया. डबल बॉटम लाइन they approach. Focus relief work. Smart work is a relief work. No hard work, you have to do it. Right? पहले बैंक में जाना था, गांव-गांव से लोग आते थे, पैर को ये करते हैं, बैंक आना है, बैंक आना है. अब घर पे ही बैंक आ गए. उन्होंने सिस्टम अपॉइंट कर दिया कि घर के घर में ही बैंक का ट्रांजैक्शन करो. कोई जरूरत नहीं बैंक में जाने की, पेंशन लेने के लिए. डायरेक्ट अकाउंट में देखो आ गई है, विड्रॉ करो. राइट?
So very nice facility provided the bank. A number of work, a number of things they provided. That is the relief, right? So anyone want to ask any question regarding this? Today we have studied a case of Jeevan Bank. Now tomorrow we have seen our next unit, and it is retail banking. What it is a retail banking? Okay. Yes. So take care. Bye bye. See you tomorrow evening. Sorry, no, morning में lecture है हमारा ना. And now your lecture is Anand sir lecture is right there. So bye bye. Take care. Any phone केला.